Hi guys, what's up? I'm Rashika And I'm Mayank. and we're back with another video, hopefully with some good news today. In the last video, we talked about the CRS cutoff and how you can possibly go through the immigration process. And in this video, we're back with some great announcement and a huge news. Hopefully that will be helpful. So without wasting any time, let's quickly get into it and see what the video is about and what the good news is. So the news is कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप टू एडिशनल 50 पॉइंट्स अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट ने. टू क्विकली टेल यू व्हाट दिस इज अबाउट, सो मार्को मेंडिचिनी, हु इज द इमिग्रेशन ऑफिसर फॉर कैनेडा, ही अनाउंस्ड अप टू 50 additional points in the CRS cutoff for express entry. What that means? So basically जिन लोगों को पहले चांसेस जिनका बहुत ही कम था आने का और जिनको ऐसा लग रहा था कि अब कोई होप नहीं है, तो उनके लिए एक ये एज अ ब्लेसिंग आई है. तो जो लोग पहले सिर्फ फ्रेंच या इंग्लिश का स्कोर करते थे या उसी का सिर्फ एग्जाम देते थे, उनके पास अब एक और ऑप्शन है कि वो इंग्लिश प्लस फ्रेंच दोनों एग्जाम दे सकते हैं और अपनी जो कट ऑफ है उसको आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो. तो जो फ्रेंच के जो आप एग्जाम देते थे एडिशनल, उसके लिए आपके जो 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते थे, अब वो बढ़ के 15 से 25 हो गए हैं. और अगर आप उसके साथ साथ इंग्लिश भी देते हो लाइक बायलिंगुअल, तो वो 30 से लेके अब 50 हो गए हैं. तो दोनों इन टोटल आपको अराउंड 75 पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर आप दोनों एग्जाम में अच्छा स्कोर लेके आओ और अच्छा स्कोर करो. Yeah. So why they're doing this? ये क्यों अनाउंस किया उन्होंने? So this is basically to preserve the francophone community, जिसको French speaking community बोला जाता है यहाँ पे. So outside of Quebec, because Quebec is a French speaking state, उसके बाहर भी French speaking लोगों को उनका influx बढ़े यहाँ पे. That's why they've sort of announced this news. So that number, percentage of people that was around 2.82% in 2019, they target up to 2023 is to increase that number to up to 4.4% of people that are French speaking or bilingual. That is the only reason why they've announced it. They did this before in 2017 as well, but they're doing it again because they have to meet their targets, and this sort of the only way and one of the biggest ways of doing this is to increase the cutoff and give additional points to people for express entry, because there's a huge amount of applications that they get on daily basis. So that's pretty much about it. Now, what does this mean for people like you and I? What does this mean for the Indian community and people in India who are trying to get here? How can you act on it, and how can you sort of benefit from this? Is something that we'll show you now. And before we get into the video any further, let me quickly show you what the announcement really is and what the press release really is. So this is the official press release जहाँ पे जो उनकी website पे release हुई है, where they talk about the increase and why they're doing it, which is basically, like I just said, to improve the French speaking community. This is the official press release जहाँ पे वो कह रहे हैं कि 15 से 25 हो जाएगा French speaking के लिए और 30 से 50 पॉइंट्स तक आपको मिलेंगे if you're a bilingual candidate. For the language skills, what it really means is that you need to have at least a band of CLC 7, NCLC 7 or CLB 7 if you're taking that language test. So you get 25 additional points अगर आपका CLB 4 या उससे नीचे है, and you get up to 50 additional points अगर आपका CLB 5 या उससे high है. लेकिन उस 50 points तक redeem करने के लिए आपको a minimum band of 7 आपको चाहिए ही होगा, which is CLB 7 for English and NCLC for French. अगेन 4 वही सेम कैटेगरीज होती हैं जैसे आपकी आइल्स में होती हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. TEF कैनेडा, TCF कैनेडा, आप दोनों में से कोई भी टेस्ट दे सकते हैं, बट आपको एक मिनिमम बैंड 7 आपको चाहिए होगा उसमें. और ये वो स्कोर कार्ड है जो आपको चाहिए होगा. इतने मार्क्स आपको ज़रूर लाने पड़ेंगे for you to be able to benefit and get that full 50 additional points. So this is what it is. It's all available on the website. We can link it down in the description. Get to CLB 7 is basically what it means is आपको एक upper immediate level, जो एक level होता है, which is your proficiency in the language, उसको बोला जाता है. So if you're somebody like us जिनको French बिल्कुल भी नहीं आती है, people like us, I mean जिनकी हिंदी और English is, let's say, their primary language, and you don't know nothing about French, you have to be at least upper immediate level in French, which equates to sort of a minimum of CLB 7 band. Now, to get there, as the experts apparently what they're saying is, and what we've read online and what we've tried to understand for you, is that to get to that level, it takes anywhere between 600 hours to up to 1.5 years of learning the language. Now, there's multiple ways that you can do this, and the top 3 ways that you can do this is you can either get enrolled in a university, you can either pick up self-study, or
you can maybe join courses and you can join native groups which will teach you the language. So basically the shortest and the quickest way to learn French is आप कोई प्राइवेट ट्यूटर ज्वाइन करो, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो या यूनिवर्सिटी कोर्सेज कोई ज्वाइन करो जो आपके पास हो. अब अगर ये कोर्सेज आपको नहीं पता आपके एरिया में कैसे मिलेंगे, तो सबसे इजी तरीका है गूगल पे जाओ, सर्च करो फ्रेंच कोर्सेज नियर मी. हो सकता है आपके वहाँ पे कोई ट्यूटर हो प्राइवेट, हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट हो जो सिखाता हो. बट हाँ, ये कोर्सेज आपको बेनिफिट कर सकते हैं अगर आप इन पे रेगुलरली वर्क करोगे. इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वर्क शेड्यूल बहुत हेक्टिक है और आप कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते हो, सो जैसे बहुत सारी एप्स हैं, अभी बताई राशिका ने कि सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, डुओलिंगो, हेलो टॉक, ये सब एप्स हैं जो आपको सिखा सकती हैं एट योर ओन पेस. सो अगर आप सेल्फ स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं, यू डोंट वांट टू डिवोट दैट मच टाइम, एंड अभी लेट्स से आपका इट्स नॉट वन ऑफ द प्रेसिंग थिंग्स फॉर यू दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर इमिग्रेशन एंड यू हैव टू, बिकॉज अगर आपके प्लान में लेट्स से साल 2 साल में है वो, तो आप अपनी पेस पे पढ़ाई कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो. लाइक आई लर्न फ्रेंच थ्रू दिस ऐप कॉल्ड डुओलिंगो. So there's multiple apps out there, paid and free in both formats, that you can download and study at your own pace and devote your own hours as per your convenience. There's also some language groups like Hello Talk, etc., that you can find, and you can be part of these groups. You can find yourself a native language speaker and they sort of become like tutors for you, because jitna aap is language ko practice karoge, like any language, the possibility of you learn the language is much quicker, it's much faster, and it's more proficient that way. So these are the few ways that you can possibly start. This can give you a head start as to where to begin. So these are those ways that you can sort of give a head start to your language speaking, and that's about it. So another thing worth mentioning is that जो आपके 50 additional points जो आपको मिलेंगे CRS calculation के हिसाब से, you can max out those points up to 74 points, which I think according to me honestly is a lot. Okay, so let's say you're somebody who's hovering let's say at 430, so अगर आपको वो 50 CLB 7 से आपको 50 अगर मिल जाते हैं वो marks, so then you sort of come and jump to suddenly at a score of 480. But if you get a CLB of 9, which is hard honestly, but if you dedicated you can do it, right? जैसे IELTS में आप 9-10 में लोग स्कोर बैंड लेके आते हैं, so अगर आप CLB 9 लेके आते हो, आप उसको मैक्स आउट करके 74 पॉइंट्स लेके आ सकते हो. So let's say from a 430 of a score you can directly land at 504, and the current cutoff is around 478. So let's say even if you take 6 months or so to learn the language, I think 500 क्रॉस करने में शायद अभी टाइम है कट ऑफ को, तो यू स्टिल हैव अ लॉट दैट यू कैन डू इन दैट्स इन योर हैंड्स. So that's another thing that's worth mentioning. So basically ये अनाउंसमेंट काफी अच्छी है उन लोगों के लिए जिनके स्कोर अभी कम हैं और जो सोच रहे हैं कि अभी 1 साल के अंदर उनका प्लान है कि आ जाएंगे, और वो कुछ वेज ढूंढ रहे हैं जिससे वो स्कोर इम्प्रूव कर सकें. तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपकी एज आप उसको चेंज कर नहीं सकते. एजुकेशन के लिए भी आप कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, बट हो सकता है वो भी आपको शायद टाइम ले लें. बट हो सकता है कि लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी लगे, आप जल्दी सीख सकें, और मतलब कि डिपेंड्स कि आपकी कैसी पकड़ है उस लैंग्वेज पे और हाउ डू यू फील अबाउट इट. सो ये बहुत अच्छा है, बट स्टिल दिस इज नॉट अ शॉर्टकट टू कम हेयर. थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लोगों के लिए, बट कुछ लोगों के लिए ये एडवांटेज भी हो सकती है. For sure, and I feel this is something that's in your hands. आपके हाथ में है वो opportunity, and this is something that you can do to sort of increase your cutoff. वेट करना कि कट ऑफ कब ड्रॉप होगी नहीं होगी, दिस इज बेसिकली बीइंग एट द गवर्नमेंट्स मर्सी एंड सेइंग कि कट ऑफ ड्रॉप होगी या नहीं. बट दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी दैट्स रियली इन योर हैंड्स, एंड इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड वर्किंग आर यू एंड हाउ विलिंग आर यू टू पुट इन दैट एफर्ट टू लर्न द लैंग्वेज. बिकॉज ऑनेस्टली फ्रेंच इज अ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन ऑल ऑफ कैनेडा, एंड possibly आपके जॉब के prospects, आपके earning के prospects, possibly they will go multifold because you know the language now, and with that proficiency if you come in, I think your prospects increase by multifold, right? So it's good in every way. So if you can learn the language आने से पहले अगर आप इंडिया में वो language सीख के आ सकते हो, then I mean nothing like it. And another thing that I feel which is basically a pro is that आप यूनिवर्सिटी के लिए लेट्स से, अगर बहुत लोगों के लिए होता है कि हम यूनिवर्सिटी का कोर्स कर लेंगे एंड वी गो फॉर मास्टर्स और अनदर डिग्री, दिस ऑप्शन इज डेफिनेटली इकोनॉमिकली मोर वायबल फॉर पीपल, बिकॉज यू विल एंड अप स्पेंडिंग लैक्स ऑफ मनी जस्ट टू गेट इनटू दैट ईयर का कोर्स और व्हाटएवर, बिकॉज आप
see, you're not spending the same amount of money on language learning skills, तो economically बहुत viable रहेगा ये option, because language सीख के वो additional 50 points लेना versus यहाँ आना और फिर यहाँ पे PR का process उसका शुरू करना. So I think it's a little expensive as well. So I think it's a great initiative, and if you can do it yourself, and I mean you find a way and you feel like you want to learn the language and आप कर सकते हो, आप hard working हो, तो nothing like it. We wish you all the best. I hope this video was helpful for you, and I hope there's a lot of people who will maybe take action on this and benefit out of this, because the possibility is huge. The marks that they're offering are huge. So I hope this video was helpful. Yes, all the best, guys. Do put your best efforts, or Yeah. all the best. Hope to see you guys in Canada Bye-bye. soon. Bye.